What is the concept of 12(2) CPC? देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. The concept of 12(2) CPC has been introduced in the year 1980. 1980 में आया या हमारे जो CPC पाकिस्तान के अंदर लेके आए 1980 के अंदर. इससे पहले क्या था कि अगर कोई जजमेंट या डिग्री या ऑर्डर फ्रॉड में बुक नहीं होता था, कोई ऑर्डर जजमेंट या डिग्री फ्रॉड के बेसिस पे प्रक्रिया होता था. कादिर साहब ने एक सूट फाइल किया या आदमी जजमेंट के खिलाफ, हमने कल्यूसिव सूट में कॉम्प्रोमाइज कर दिया. हमने कहा यार प्रॉपर्टी मुझे भी पता है कि लड़के की है, मगर और इसको भी पता है कि लड़के की है. हमने कल्यूसिव सूट फाइल किया, हमने कॉम्प्रोमाइज किया, डिग्री मैंने ले ली. इन्होंने कहा कादिर साहब 50% मैं रखूंगा पैसे, 50% आप रखना, प्रॉपर्टी हम बेच मारेंगे. लड़के को पता चलता है कि भाई वो प्रॉपर्टी ने ली थी और कादिर साहब ने लड़के ने मिलकर डिग्री ले ली. तो 1980 से पहले क्या था कि बेचारा ये लड़का अगर ये जाए वकीलों के पास या अदालत में, तो कानून कहता था आप एक दावा फाइल करें. आप दावा फाइल करें सूट फॉर डिक्लेरेशन के साथ कादिर साहब ने मेरी प्रॉपर्टी फ्रॉड पे मिसरेप्रेजेंटेशन के जरिए सूट फाइल करके कल्यूसिव के लड़के से करवाई और एक डिग्री ले ली और एग्जीक्यूट करवा ली और प्रॉपर्टी का कब्जा भी ले लिया. मुझे पता नहीं था, मगर इसका दावा फाइल करना होता था. सूट फॉर डिक्लेरेशन सेटिंग असाइड एंड टेकिंग द पोजीशन, वो दावा बहुत लंबा चलता था. भाई एकदम तो दावा खत्म नहीं होता, जवाब दावा आता था, इश्यू सेटल होते थे, एविडेंस चलता था और पता चला कि उसमें 4-5 साल गुजर जाते थे. To overcome and this difficulty of this prolonged litigation, the legislature in its own wisdom enacted section 12(2) in the year 1980. और उन्होंने ये कहा 12(2) के अंदर स्कोप को वाइड किया. उन्होंने कहा एनी पर्सन, एनी पर्सन, देखिए पार्टी नहीं कहा, अभी मैं समझाता हूँ. एनी पर्सन against whom any order, judgment or decree which has been obtained by way of fraud, देखिए समझिएगा, misrepresentation or without jurisdiction, देखो तीनों चीजें, am I with you, can come forward and can move an application under section 12(2) CPC. Am I with you? Before the court from which the decree has been obtained. देखो बड़ा ग्रीन दे दिया. अब आपको इंडिपेंडेंट सूट फाइल करने की जरूरत नहीं लड़के को. अगर मैंने और इसने जाके आपके खिलाफ फ्रॉडुलेंट डिग्री ली है, आप उसी केस के अंदर, am I with you? You may not be the party to the proceeding. Any person है, am I with you? जिसके राइट मजरू हो रहे हो, आप 12(2) की दरखास्त दे कादिर साहब और लड़के के खिलाफ इस सर आपने फ्रॉड पे मिसरेप्रेजेंटेशन के जरिए कादिर साहब ने ऑर्डर दिया है या अदालत को जुरिस्डिक्शन ही नहीं था कि सर ये फाइल करने का. मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 2 करोड़ रुपए और मैंने सिविल जज के पास जाके पैसे खिला के, अल्लाह ना करे तौबा नौजुबिल्लाह, मैंने वहां पैसे खिला के सिविल जज से मैंने डिग्री ले ली, इसको जुरिस्डिक्शन ही नहीं. अभी जो हमारे समझ के तो 12(2) is a remedy which is substantive in nature, मगर कब मेरे बच्चे, when any order, देखो यहाँ पे any order, चाहे इंटरलॉकिंग कोई हो, any order, judgment or decree which is obtained by way of fraud, misrepresentation or without jurisdiction. What is a fraud? आपने पढ़ा होगा jurisprudence में, fraud is one of the most serious act which is deprecated by law. Am I with you? Fraud vitiates the most trustworthy transaction and deeds. Am I with you? चाहे कादिर साहब ने रजिस्टर्ड सेल भी क्यों नहीं करा ली हो, आपने पार्टनरशिप डीड क्यों नहीं करा ली हो, आपने लीज डीड क्यों नहीं करा ली हो, अगर ये लड़का आपके खिलाफ प्रूफ कर देता है तो ये फ्रॉड में होती है. चाहे ये डीड क्यों ना हो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, it vitiates the most solemn or trustworthy documents or instruments. Am I with you? Misrepresentation. आपने पढ़ा होगा सेक्शन 16-17 में contract where you misrepresent. Am I with you? Either तुम misrepresent सामने वाले बंदे को misrepresent करके देते हो ऑर्डर, या आप you misrepresent the court और कोर्ट को गलत बयानी से बताते हो कि नहीं सर ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, हकीकत में वो लड़के की प्रॉपर्टी है. You play a false game with the court. Am I with you? You misrepresent.
and you show or portray a different picture than what is the true reality of it, then why not that order, judgment or decree can be vitiated on the ground of misrepresentation. Or the third is without jurisdiction. Jurisdiction क्या है? The power of the court to entertain, to hear and decide the matter. Am I with you? एक प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की एविडेंटली आपने उसकी वैल्यू छिपाई, am I with you? और आपने सिविल जज के पास वहाँ फाइल कर दिया, आपने उसको बताया कि नहीं सर इसकी वैल्यू नहीं है। और सर अगर उसको जुरिसडिक्शन ही नहीं था तो आपको हाई कोर्ट में फाइल करना था सर केस, that basic order which you obtained is totally without jurisdiction. Am I with you? So by law, such a relief can be granted in a manner which is provided under section 12(2). Am I with you? और 12(2) के अंदर प्रोसीडिंग्स क्विकर की रेमेडी होती है। कभी कभार कोर्ट ये समझती है सर काले साहब ने वाकई में फ्रॉड किया, चले हम इशू सेटल करते हैं, एविडेंस चलाएं इस पे फटाफट और हम इसको So this is a remedy which is introduced in the year 1988 CPC में इंट्रोड्यूस किया। अब ये देखिएगा, अब निकालेंगे आप देखिए ये वो केस है कि जहां पे टेनेंट ये कहता है, देखिए सुनिएगा, ये रेंट केस है, रेंट केस के अंदर से दिया है 12(2) कैन बी फाइल्ड इन एनर्स ऑफ प्रोसीडिंग। ये वो केस था जहां पे इसकी डेट्स का खेल है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि ये किराएदार है, पहले जरा समझिएगा, मोहम्मद किराएदार एंड मोहम्मद इज द लैंडलॉर्ड। है विद यू? ये पहले प्रॉपर्टी जो थी वो दादा की थी, दादा ने अपनी बेटी को गिफ्ट किया, यानी याया सुल्तान की अम्मी को गिफ्ट किया। Am I with you? और गिफ्ट करने के बाद उसकी अम्मी ने गिफ्ट किया याया सुल्तान को। Am I with you? पर्टिकुलर डेट को गिफ्ट किया। अब केस याया सुल्तान ने फाइल किया, याया सुल्तान ने कहा भाई मुझे जगह ये चाहिए है, मोहम्मद अली साहब अपनी तारीख रोड की दुकान है, मुझे मैं कारोबार करना चाहता हूँ, मैं आपके खिलाफ। ये केस चलता है, लीगल नोटिस आती है, ये है, तो इसके वकील साहब नोटिस में कहते हैं कि भाई तुम अगर ओनर बन गए याया सुल्तान और तुम्हारी अम्मी ने तुमको गिफ्ट किया है तो जरा तुम अपने डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल तो पेश करो। वो पेश ही नहीं करता, जरा सुना, वो केस फाइल कर देता है, रिटन स्टेटमेंट आता है, क्रॉस चलता है और जनाब फिर से उससे रिक्वेस्ट होती है तुम टाइटल डॉक्यूमेंट्स तो पेश करो जो तुम कहते हो कि तुम्हारे दादा की प्रॉपर्टी थी, दादा ने ट्रांसफर की तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारी अम्मी ने फिर गिफ्ट कर दी तुमको। Am I with you? ताकि हम देखें कि तुम ओनर तो हो कि नहीं। ये पेश करता है द एविडेंस। Am I with you? लेट स्टेज पे जब वो पेश करता है आया सुल्तान तो उसका वकील पकड़ लेता है कि जिस तारीख को इसने दावा फाइल किया था इसको खाली कराने का, उस दिन याया सुल्तान जो है इसका ओनर ही नहीं था। Am I with you? उसका ओनर ही नहीं था। Am I with you? जो गिफ्ट की है वो उसके बाद की डेट की गिफ्ट की। Am I with you? अम्मी ने मिसाल के तौर पे अम्मी कर रही है 1 अक्टूबर को गिफ्ट 2022 को। Am I with you? और याया सुल्तान ने 1 सितंबर 2022 को खाली करने का ऑर्डर किया। तो जब तुम लैंडलॉर्ड ही नहीं थे, तुम ओनर ही नहीं थे सर आपने दावा मेरे खिलाफ कैसे फाइल किया? आ रहा है समझ के? तो ये उसकी प्रिंसिपल है। देखिए इसमें डेट्स का खेल है, तो इसने 12(2) का कहा है कि सर फिर तो कोर्ट को जुरिसडिक्शन ही नहीं था एंटरटेन करने का ये केस को, क्योंकि वो तो ओनर ही नहीं था, इसलिए मेरे खिलाफ वो ये किया है और ये जीत गया था यार, सब तो वो सेट असाइड करा रहा है। और ये उसको हाई कोर्ट ने भी कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट से भी कर दिया था और उसने जाकर 12(2) की दरखास्त की है फ्रॉड पे मिसरिप्रेजेंटेशन। मैंने मार्क किया है बच्चों को समझाने के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है? कुछ स्टोरी समझ में आ गई है? आप देखिएगा, इन द कोर्ट ऑफ रेंट कंट्रोलर कराची ईस्ट रेंट केस फलाना मोहम्मद अली। अच्छा एक चीज याद रखना जब मैं क्या कहता हूँ 12(2) is an independent remedy, 12(2) is a substantive remedy। मैंने आपको दोनों वर्ड लिखवाए, 12(2) is an independent remedy, 12(2) is a substantive remedy, राइट्स क्रिएट करता है ना। Am I with you? Am I with you? अब इसके अंदर क्योंकि पहली दफा आप अदालत में आ रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, Am I with you? आपको पूरा उसका एड्रेस मेंशन करना है। Am I with you? अगर इंडिपेंडेंट पार्टी है तो अब देखिए, मोहम्मद अली सन ऑफ हाजी मोहम्मद यूसुफ, मुस्लिम मैटर, टेनेंट ऑफ शॉप नंबर 3 290C R1 मार्केट, सेंट्रल कमर्शियल एरिया, तारिक रोड, PCHS सोसाइटी कराची, एप्लीकेंट। ये कौन है जो कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है 12(2) एप्लीकेशन वर्सेस मोहम्मद याया सुल्तान सन ऑफ मोहम्मद इस्माइल सुल्तान, मुस्लिम मैटर, रेजिडेंट ऑफ 239
Delhi Mercantile Society, block number 3, Sheldon Millar Road, Karachi, opponent. Am I with you? ठीक है? अब application under section 12 CPC, read with section 151 CPC. मैंने हमेशा आपको बताया मेरे बच्चों, आप जब भी इंटरव्यू एप्लीकेशन में 151 का सहारा दें, आपका केस क्या पता 12 में ना मिले, मगर इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट में कोर्ट आपको कुछ छोटी मोटी रिलीफ ग्रांट कर दे। It is respectfully submitted that, अब देखना बहुत आसान फैक्ट्स है, मैंने आपको बताया। For the facts and reasons disclosed in the accompanying affidavit, this honorable court may be pleased to set aside the order of ejectment dated 31/3/2007 and dismiss the application filed by the applicant under section 15 of the Selected Witnesses Ordinance. Am I with you? चलिए, अब देखिए affidavit. बोलिए टाइटल छोड़ दो एफिडेविट। Am I with you? I, Muhammad Yahya Sultan, son of Muhammad Ismail Sultan, Muslim elder, resident of 239 Delhi Mercantile Society, Sheldon Millar Road, do hereby state on oath. Am I with you? That I am the opponent in the above noted case as such well conversant with the facts of the case. अब देखिए, the applicant sent notice dated 4 अगस्त 2002। अब देखिएगा, एप्लीकेंट ने मुझे नोटिस दी 4 अगस्त 2002, wherein it has been alleged that by virtue of declaration of gift, एप्लीकेंट कौन है जिसने दावा फाइल किया या वो जो है, am I with you? But by which wherein it is alleged that by virtue of declaration of gift, he has become the owner of the shop of ground floor premises. Number 1 on first floor of the building situated on plot 290 Central Commercial Area, Tariq Road, Karachi, and claimed rent with effect from 1st Jan 2002, hereinafter called the premises. या सुल्तान ने मुझे सर नोटिस दी कि मैं डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट के जरिए ओनर बन चुका हूँ, अब किराया मुझे दे दिया करें आप, ठीक है? अनीस साहब, in reply to the letter of the applicant was also requested to provide copy of नहीं यहाँ से such notice was replied by letter dated 5/8/2002। मोहम्मद अनीस साहब ने इसका रिप्लाई दिया, am I with you? 5/8/2002 को, where it was stated that the rent is being deposited in MRC 130 of 2002 and further stated that rent from April is being sent by money order फलाना फलाना। इसने कहा सर मैं MRC में जमा करा रहा हूँ रेंट, और मैंने आपको उसके बाद में मनी ऑर्डर के जरिए मैं आपका जो पुराना जो मेरे जो टेनेंसी एग्रीमेंट है अम्मी के साथ आपकी वालदा को मैं दे रहा हूँ। देखिए, इन द रिप्लाई एप्लीकेंट वाज आल्सो रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड द कॉपी ऑफ द गिफ्ट डीड। अनीस साहब ने उसको रिक्वेस्ट की कि सर मुझे गिफ्ट डीड की कॉपी तो आप दें, आप कह रहे ना कि आप ओनर बन गए, हमने आपको रिक्वेस्ट किया। Neither copy of the gift deed nor the particulars of the alleged gift deed were provided to me। हमको सर आपने प्रोवाइड भी नहीं की गिफ्ट डीड की कॉपी, के पता चले कि आप ओनर बन चुके हैं। आगे बढ़िए। The applicant filed the above case alleging that he has become the owner of the premises। उसने alleged किया मैं ओनर बन गया और उसने दावा मेरे खिलाफ खाली करने का फाइल किया। While declaration of gift dated 1/9/2000 executed by his mother in his favor। Am I with you? ये डेट उसने alleged। Who was the previous owner of the same premises? अम्मी जो है वो पहले ओनर थी पर उसने गिफ्ट कर दिया उसको। It is submitted that a copy of the alleged gift dated 1/9/2000 was neither supplied to me in reply to my demand but letter dated nor attached with the ejectment application। ना मुझे सप्लाई की थी ना ejectment application पर दावा फाइल करना जब उसने ये गिफ्ट डीड लगाई दी थी। अब देखिए, that on receipt of the notice from this honorable court, I filed the written statement। यानी अनीस साहब कहने मैंने जवाबदावा फाइल किया और 2/4/2003 when an allegation leveled in the rent application that refuted का मतलब मैंने deny किया, refuted and it was specifically stated, देखिए आप ऊपर कीजिएगा मैंने underline किया, it was specifically stated that mother of the applicant was not the owner of the premises, as such she was not legally entitled to give the premises to the applicant। Am I with you? कि मदर जो है वो आपकी ओनर ही नहीं है। Am I with you? और जब मदर ओनर नहीं है तो वो गिफ्ट भी नहीं कर सकती थी अपने बेटे को या सुल्तान को। Am I with you? Nobody can transfer a better title than what he himself has transferred a property of principal। The elements in the written statement are remain
undisputed, वो undisputed करेक्टर स्टेटमेंट के। अब देखिएगा, the applicant in support of the allegation leveled in the ejectment application filed affidavit in evidence, wherein the applicant reiterated that he has become the owner of the property. फिर से आएगा सुल्तान ने कहा मैं तो owner बन गया of the property by declaration of gift dated 1/9/2000, 1 September 2000 को मेरे फेवर में गिफ्ट दी है। As such, deed was no such deed was executed in his favor by his mother applicant. Attached photocopy of the gift deed dated, अब देखिए गिफ्ट डीड की देखिएगा डेट 14/3/2000। Am I with you? देखिए आप डेट का देखिएगा। It is submitted that the applicant claimed ownership of the premises by declaration of gift dated 1/9/2000। वो कह रहा है 1/9/2000 से था। No such deed was attached with the affidavit in evidence. Applicant attached photocopy of the gift deed registered on 14/3/2000। Am I with you? Photocopy of the same is included. ना ऊपर कीजिएगा। That on perusal, देखिए मैंने आपको लिखा है। That on perusal of the contents of the gift deed फलाना फलाना it revealed, अब देखिए हाजी शेख मोहम्मद इलियास इसका दादा। Am I with you? हाजी शेख मोहम्मद इलियास original owner landlord gifted the same premises to रुखसाना बेगम mother of the applicant। Am I with you? जो उसकी माँ है। कौन सी तारीख को दिया the gift deed? 11/9/2000 and the same was registered on 16/9/2000 while the same रुखसाना बेगम mother of the applicant gifted the same property to the applicant on 1/9/2000। जो घर नहीं सकती थी उस वक्त वो ओनर ही नहीं थी सर रुखसाना। Am I with you? 1/9/2000 on a day when she was not the owner of the said premises। Am I with you? और उसने ejectment को लड़के ने जाके फाइल किया है कि I am the owner of the property और सर आप खाली करें। आ रहा है ये उसके वकील ने पकड़ा है यहाँ पे के साथ। In fact, applicant did not produce any document to show that on 1/9/2000 he was the owner of the said premises। Am I with you? In fact, Musamma Rukhsana Begum, mother of the applicant on 1/9/2000 was neither the owner nor the landlord. The mother of the applicant did not possess or own the same premises on 1/9/2000. As such, she was not entitled to give the same property to the applicant। जब वो मदर ही ओनर नहीं थी तो मदर क्या उसको ट्रांसफर करती? आया कि वो जो है डेट से उसने पकड़ा है। Now, gifted the premises as per alleged. Her father gifted the same premises to Musamma Rukhsana। ये मैंने पढ़ लिया ना? Yes sir। Her father gifted the same premises to Musamma Rukhsana, the mother of the applicant, on 11/9/2000। अप्पा ने कब रुखसाना को किया है? 11/9/2000। और वो कहता है सर मैं 1 सितंबर को मैं बन चुका हूँ। जब अप्पा ने इसको 11/9/2000 को रुखसाना को उसकी मदर को किया है तो उसके बाद ही ट्रांसफर हो सकता था, उससे पहले तो नहीं हो सकता। 11 purported to have been registered under फलाना फलाना dated 16/9/2000। देखिए मैंने डाला है fraud misrepresentation। Applicant has made misrepresentation and played a fraud to obtain the ejectment order against me। मेरे साथ सर उसने fraud किया है, misrepresentation किया because he was not the owner of that particular property। Am I with you? It is also submitted that applicant has claimed to be the landlord on the basis of ownership, while in fact he was not the owner of the same premises because the mother did not own or possess the same premises on 1/9/2000। जिसके मदर के फादर ने या इसके याया के दादा ने ट्रांसफर ही उसके बाद किया है। एवरीथिंग ही उसका किया है, डेट का है। एवरीथिंग अब आपकी मर्जी, आप कोई भी डेट करके आप इसमें चेंज करके आप बना सकते हैं। The applicant has acquired the same premises on rent from Sheikh Mohammed Ilyas, the original owner of the said premises। ऊपर कीजिएगा। The order of ejectment dated फलाना फलाना has been obtained by applicant by making this misrepresentation, playing fraud upon me as well as upon the court। कोर्ट पे भी उसने फ्रॉड किया, जज साहब ने भी उसने नहीं बताया अदालत को। As such, the order dated is liable to be set aside। That on the date of filing of the ejectment application there was no relationship of landlord and tenant। तो वकील उसको निकाल रहा है कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट की रिलेशनशिप होती तो आपको जुरिसडिक्शन होता ना। सर कोई रिलेशनशिप ही नहीं थी, वो लैंडलॉर्ड ही नहीं था ना उसका टेनेंट था। तो जो उसने दावा फाइल किया है that was
without restriction. Am I with you? There was no relationship between landlord and tenant, between the me and the applicant, as applicant was neither the owner nor the rent collector or attorney or the owner of landlord, and as such this honorable court has no jurisdiction in to entertain, proceed and pass ejectment order in respect of the same premises. Hence the order of ejectment in respect of the premises is liable to be, is nullity in the eye of law, is liable to be set aside. ठीक है, फिर उसने फैक्ट्स डाले. I filed FRA which was disposed of by Honorable ADJ Karachi by order dated, and order of ejectment dated was upheld. Thereafter I challenged the order in CP in the High Court. The High Court also disposed of the petition on legal points by order dated falana falana. Factual points were not allowed to be raised. फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट में गया था ये. That I being agreed and dissatisfied by the order of the Honorable High Court, I filed CPLA for leave to appeal in the Supreme Court, and the same was dismissed by order dated falana falana. ऊपर कीजिएगा. The applicant has obtained the ejectment order by making misrepresentation and playing fraud. Moreover, the Honorable Court has no jurisdiction to pass the order of ejectment, as there was no relationship between the landlord and tenant, between me and the applicant. ऊपर कीजिएगा. The claim raised by the applicant is such based on ownership of the premises, while he was neither the owner nor the rent collector or owner of the premises. Am I with you? वो landlord की category में गिरता ही था, ना rent collector था, ना owner था, और उसका. I have been advised to state which advice believed to be true, and order falana falana is based on fraud, misrepresentation, as well as this honorable court have no jurisdiction to try the case, and all the subsequent orders based thereon on fraud and misrepresentation. I submit that order dated is liable to be set aside. Consequently, ejectment application is also to be dismissed. Am I with you? Last but not the least, whatever stated to the best of my knowledge and belief. Am I with you? In nutshell, 12 मैंने आपको बताया, it's a sort of an independent remedy. It is a sort of a substantive application. And 12 the legislature in its own wisdom has enacted in 1980. अगर ये 1980 से पहले होता तो फिर तो सर सूट आपको फाइल करना था काले साल. 12 आपका भाई नहीं था. Am I with you? The 12 is a comprehensive application. It is a sort of a substantive right which is conferred or gave. ठीक है? Am I with you? Yes, sir. Thank you, sir.